Hello students, welcome back to our online classes with Best English School. I am back with your new video of social science subject students. So students, in the previous video, I have completed the chapter 1 of the social science subject Arrival of Europeans in India. Right students, I hope that you have got the whole detail about the first chapter. Now, today in this video, we will start the chapter 2. So, you can see in your screen about the chapter 2 may arrives as the name What is Around Us. So, students, you can tell me that what is around us. What is around us means कि हमारे बगल में अगल बगल में क्या क्या चीज़ें हैं students. So, could you tell me that what is around us students? I know you can, but right now you can't tell it out, right? So it's my turn, students. So in this chapter, we would discuss about that what is around us. हमारे अगल बगल में जो चीज़ें हैं, nature, atmosphere, all these things we will discuss in this video. So students, let's get started. The chapter 2 social science subject what is around us with a question mark students. Okay, so let's begin our first page of this chapter students. I hope that you can see this whole page in your screen clearly, and if you have any problem with my voice or with the screen, you can just comment me down in the video. Okay, so let's begin. Dhanveen was roaming in the garden with his mother. While walking, a question arose in his mind. Dhanveen asked his mother, "What is land made up of?" Mother replied, "Do you see the sun every day?" Question mark. The sun too has a family, which is known as the solar family. Our Earth is one of the members of the solar family. The most important point is that only the Earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living beings. So students, who are the living beings? We, humans, animals, we all are the living beings. We can breathe, we can do any work, we are having a soul. So that's the reason we are living beings students. So in the first paragraph, there was a boy who asked, who was roaming. Roaming means you will ask me that what is the spelling of roaming. This one is the roaming students. ROAMING roaming. Roaming मतलब वहाँ पे घूमना students. So Dhanveen was roaming in the garden and he asked his mother that what is land made of? मतलब land किससे बनता है? So mother replied, do you see the sun every day? The sun too have a family. Is known as solar systems. सन का भी एक फैमिली है जिसको हम लोग सोलर फैमिली बोलते हैं, एंड आवर अर्थ इज़ वन ऑफ द फैमिली ऑफ द सोलर फैमिली स्टूडेंट्स. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट द अर्थ आर अमोंग ऑल द मेंबर्स ऑफ सोलर फैमिली. अर्थ सोलर फैमिली के मेंबर्स है, राइट. एंड अर्थ ही एक ऐसा प्लेस है, एक प्लैनेट है जिसके सूटेबल टेम्परेचर है, वाटर है एंड एयर टू सस्टेन लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स जी सके इसलिए ये चीज़ यहाँ पे है स्टूडेंट्स. नाउ generally that is believed that part of sun which has been detached from the sun after the collision is earth. At the time of its origin, it was in the form of a fireball. This fireball started to cool down slowly. Many elements of the earth got transformed into liquid and further into solid form. So students, we believe that sun is also having a part, right?
तो सन के पार्ट्स में से एक अर्थ है, जो अर्थ का खुद ब खुद एक टाइम लिमिट है अबाउट इट्स ओरिजिन। अर्थ का एक टाइम लिमिट है एंड दिस अर्थ इज़ अ फॉर्म ऑफ फायर बॉल। ये जो इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ फायर बॉल, एक्चुअली एक फायर बॉल की तरह था, बट ये जो फायर बॉल था वो स्लोली स्लोली कूल डाउन होने लगा, मतलब ठंडा होने लगा। सो मेनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड एंड फर्दर इनटू सॉलिड फॉर्म। मतलब अर्थ के जितने सारे एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो सारे किस में चेंज होने लगे, लिक्विड फॉर्म में, और कभी कभी सॉलिड फॉर्म में भी चेंज होने लगे। क्या चेंज होने लगे? मेनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ स्टूडेंट्स। ओके, during this process, the elements which got transformed into solid are known as the lithosphere. So students, ये जो प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस के टाइम में जो एलिमेंट्स, जो चीज़ें, अर्थ के पार्टिकल्स जो ट्रांसफॉर्म हो गए सॉलिड में, सॉलिड सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो गए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिथोस्फीयर बोलेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? लिथोस्फीयर। Okay, Lithosphere, lithosphere. And the elements which got transformed into liquid are known as hydrosphere. So जो एलिमेंट लिक्विड में फॉर्म हो गए हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और जो एलिमेंट्स गैसेस में फॉर्म हो चुके हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? एटमॉस्फेयर बोलेंगे। सो वी गॉट टू नो थ्री थिंग्स। फर्स्ट वन, दैट हैव बीन ट्रांसफर्ड इन सॉलिड, जो सॉलिड में ट्रांसफ़र हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। और जो लिक्विड में ट्रांसफ़र हुआ उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। और जो गैसेस में ट्रांसफ़र हुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एटमॉस्फेयर स्टूडेंट्स। आई नो यू हैव लर्न दिस वन इन योर junior classes, but actually students, this is something little bit new also. Okay, so students, above all, the living world which developed due to land, water and air came to be known as the biosphere. And in this way, the four phases came into existence on earth. सो स्टूडेंट्स, अबव ऑल मतलब ये सबसे भी बढ़ के क्या है कि जो लिविंग वर्ल्ड है, ये जो हमारा अर्थ एक लिविंग वर्ल्ड है, राइट? तो इसमें क्या है? लैंड है, वाटर है और एयर है। ये सारे जो चीज़ें हैं वो डेवलप हुई और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बायोस्फीयर बोलेंगे स्टूडेंट्स। हम लोग इसको बायोस्फीयर बोलेंगे। तभी जाके चार सब्सटेंसेस एग्जिस्टेंस होते हैं। क्या था पहला वाला? लिथोस्फीयर, then hydrosphere, and then atmosphere, and this one is biosphere students. Okay, so this is little bit definition of all these four, but now we will see the whole detailed about this four phases which have been existed on earth students. So in the diagram students, you can see it clearly that there are these four spaces exist in on earth. First one you can say air, earth. You can say over here atmosphere students, right? This one is the atmosphere, and this one is the biosphere, and this one is the hydrosphere, and this one is the lithosphere students. So lithosphere क्या था? सॉलिड सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं लिथोस्फीयर के वहाँ पे वो सारे सॉलिड सब्सटेंस है। हाइड्रोस्फीयर क्या था? जो लिक्विड फॉर्म में है। तो वाटर इज़ अ लिक्विड फॉर्म, राइट? सो दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर। और जो गैसेस में सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटमॉस्फेयर, राइट? सो तो एटमॉस्फेयर क्या है? गैसेस, हवा, ऑब्वियसली। एंड ये तीनों का मिक्सचर, ये जो तीनों मिक्सचर है, ये तीनों क्या है? बायोस्फीयर है स्टूडेंट्स। ओके, गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, this diagram which have been given over here, this diagram you have to draw it in your notebook students. Okay, this whole spaces of the earth, you have to draw this whole diagram in your notebook. That could be must came in your exam definitely. Okay students, so you have to draw it. Now part by part we will discuss about firstly
What is lithosphere, students? So let's begin, student. Lithos Lithosphere. The spaces which we live is known as the lithosphere. Lithos means rock and sphere means layer. So students, जो स्पेसेस में हम लोग रहते हैं उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं. लिथो मीन्स रॉक, रॉक को बोलते हैं पत्थर को, और स्पेयर किसको बोलते हैं? एक लेयर को बोलते हैं, एक वेव्स को बोलते हैं स्टूडेंट्स. The upper layer of the earth is made of soil and solid materials like rock. So जो सबसे ऊपर वाला लेयर है अर्थ का वो सॉइल और वो एक सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है जैसे कि रॉक. Approximately 29% of the earth surface of the earth is covered with lithosphere. This layer is almost 64 kilometer to 100 kilometer thick. The thickness of the lithosphere is not the same everywhere on the earth. Similarly, their interior and exterior do not have identical physical features. It is mostly made up of substances like soil and rocks. So students, in this one, see 29% जो अर्थ का पूरा सरफेस है वो लिथोस्फीयर से बना हुआ है जो अप्रॉक्सली 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक है. दैट इज़ अ थिक लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर. सो द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज़ नॉट सेम एवरीवेयर. पूरे अर्थ में सेम टू सेम नहीं है. पूरे अर्थ में लिथोस्फीयर का जो थिकनेस है वो थिकनेस, ओके. एंड द इंटीरियर एंड एक्सटर्नल डू नॉट हैव आइडेंटिकल फिजिकल फीचर. जो अंदर का भाग और बाहर का भाग है वो सिमिलर नहीं है, उसमें डिफरेंसेस ऑब्वियसली है. व्हाई? बिकॉज इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ सॉयल एंड रॉक्स. ये किससे बना गया है? सॉयल और रॉक्स से स्टूडेंट्स बना गया है. Landforms like mountains, plateaus, plains, and valleys are seen on the lithosphere. The temperature increases as we move towards the center of the earth. The molten rocks in the interior of the earth are called magma. There are many gases present in the interior of the earth which rise up with pressure and heat. So students, जो लैंड है हमारा ये किससे बना हुआ है? माउंटेन्स, लैंड्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड वैलीज. दीज ऑल आर लिथोस्फीयर. व्हाई? बिकॉज इट इज़ रॉक मटेरियल एंड सॉलिड है ये सारे, राइट. सो दैट्स द रीज़न द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज समटाइम्स इन द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के सेंटर में टेम्परेचर बढ़ता है और फिर क्या होता है? मॉल्ट्स निकलते हैं. रॉक सब्सटेंस इंटीरियर मतलब अर्थ के जो इंटीरियर अंदर के भाग है उसमें रॉक्स मॉल्ट होने लग जाते हैं. मॉल्ट मतलब पिघलने. इट्स यू कैन से लावा टाइप. सो दैट इज़ कॉल्ड नोन एज मैग्मा. एंड देन देर वुड बी अ मेनी गैसेस प्रेजेंट होते हैं अर्थ के अंदर के भाग में जिससे एक प्रेशर और एक हीट बिल्टअप होता है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. क्या बढ़ता है बेटा? मैग्मा. जो गैसेस प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ के अंदर वो राइज अप बढ़ जाता है और उसमें बहुत प्रेशर और हीट भी होता है स्टूडेंट्स. बट द प्रेशर ऑफ रॉक्स of the substance of the earth is equally strong. Thus, balance between the two is maintained. So, the crust of the earth does not break. When the balance between the two is not maintained, the crust breaks and volcano erupts. So, students, जो ये हीट और प्रेशर बढ़ता है राइट मैग्मा के थ्रू, तो वो एक प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग होता है अर्थ में, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो कभी कभी मेंटेन नहीं कर पाता है और द अर्थ ऑफ द क्रस्ट कुड बी ब्रेक. ये पूरा का पूरा ब्रेक होने लग जाता है. तो ये दोनों का जो बैलेंस होता है वो नहीं रहता एंड उसके बाद वॉल्केनो इरप्शन होता है. आप लोग को पता है कि बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में इन आवर होल वर्ल्ड इन अर्थ देयर आर सम पार्ट्स वेयर volcano erupts or volcano is so hot that if one
boon means it's one plits will be over in our hand or in any part of our body, we would be burned. मतलब वो इतना इतना हॉट होता है, इतना गर्म होता है कि एक बूंद भी हमारे कोई भी बॉडी पार्ट्स में पहुँच गिर जाए तो वो पूरा का पूरा जल जाएगा। एंड उसका पेन तो अलग ही है स्टूडेंट्स, राइट। मम्मी, हाउ इज़ द लिथोस्फियर यूज़फुल टू अस? या लिथोस्फियर हमारे लिए यूज़फुल कैसे है? Where can we construct our home if the lithosphere is not there? Without lithosphere, how can we get water to drink, agriculture for food, minerals for industries and forest? सो स्टूडेंट्स, हम लोग जब लिथोस्फियर है तभी तो हमारा घर बनेगा, तभी तो हमारे पास पानी है, खाने खाने के लिए हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं और मिनरल्स हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ में। और द मेन थिंग इज़ दैट द फॉरेस्ट आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दिस होल थिंग, वाटर, एयर, फूड, मिनरल्स, फॉरेस्ट, these all are having a very important role in our life, right students? So students, let's see the hydrosphere. What is hydrosphere? Now, let me talk to you about hydrosphere. The hydrosphere is the liquid component of the earth. It includes the oceans, seas, lakes, ponds, rivers and streams. On the surface of the earth, the area of water is more than that of land. Hydrosphere covers 71% of the earth's surface. A water body in hydrosphere that carries a huge amount of water is known as the ocean. These oceans are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean and the Indian Ocean and the Arctic Ocean. All these oceans are connected with each other. So students, now we will discuss about the hydrosphere. Obviously, we know that with the introduction that hydrosphere is a liquid component of the earth. For example, oceans, sea, lakes, ponds, rivers, streams, right? And students, there is a very important thing is that these all water area is more than the land. जो लैंड एरिया है हमारा, उससे बहुत ही ज़्यादा वाटर एरिया कवर किया हुआ है हमारे अर्थ में स्टूडेंट्स। सो हाइड्रोस्फीयर कवर 71% ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब ये जो लिक्विड है, ये जो पानी है, वाटर है, ये 71% हमारे पूरे अर्थ में फैला हुआ है एंड इट इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर. दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ नोन एज द ओशन. So we all know the oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and the Arctic Ocean, right? And all these oceans are connected with each other, obviously, right? Because 71% of the Earth's surface is the water. The water bodies close to the land are known as seas, bays, straits, gulfs and etc. The oceans on the earth are huge and deep. Valleys with depth of 10 to 11 kilometers are located at their bottom. The ocean bed has similar features like that of the surface of the earth. It has high mountains, plateaus, vast plains, valleys, etc. So students, these water bodies is very much close to our land. For example, that is sea, bays, straits, gulfs. These all are the part of the water bodies. And oceans जो है हमारे अर्थ में, वो बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है और बहुत डीप है. इट्स डेप्थ इज़ वेरी डीप. मतलब पानी के अंदर बहुत नीचे बहुत डेप्थ है. आप ये बोल सकते हो 10 to 11 किलोमीटर तक इतना डेप्थ होता है ओशंस में. और इसके जो फीचर्स है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए. एंड इट हैज़ हैविंग अ हाई माउंटेन्स, प्लेटूज, वेस्ट प्लेन्स एंड वैलीज एक्सेट्रा. So, Mummy, how much water will there be in the sea? Since sea water is salty, it is useful to us. So, students, इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये वाटर हमारे लिए सी में कितना होगा, कितना पानी होगा, क्योंकि सी वाटर तो बहुत सॉल्टी होता है. एंड इज़ इट यूज़फुल टू अस? क्या हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं? तो देखो, यस,
Yeah, we can use it out. Oceans contain 97% of the total amount of water on the earth. 97% पानी अर्थ में ओशन कलेक्ट करके रखता है, जिसमें 1/3 पानी होता है जो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में होते हैं. ग्लेशियर्स पता है ना स्टूडेंट्स, एटलांटिक जगह आपने सुना है, अंटार्कटिका आपने सुना होगा स्टूडेंट्स. तो अंटार्कटिका में बहुत बड़े बड़े आइस कैप्स और ग्लेशियर्स है. फॉर एग्जांपल पोल्स, हिमालयाज एंड अदर माउंटेन्स. जो एक ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर वो होता है जो पहाड़ बने होते हैं, बर्फ़ के पहाड़ बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स. तो वो जो पहाड़ बने होते हैं उसी में तो आधा से ज़्यादा पानी हमारे अर्थ का है वहाँ पे, क्योंकि बाय चांस वो कभी मेल्ट हो गया स्टूडेंट्स तो पूरा का पूरा अर्थ हमारा डूब सकता है, इतना पानी है, क्योंकि 97% वाटर हमारे ओशंस में ही है, राइट. तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है ऑब्वियसली. Some water is accumulated in the lakes and some flows in the river, and some is stored in the interior of earth as groundwater. So students, बहुत सारा पानी तो लेक और बहुत सारा पानी रिवर्स में है. मतलब 97% पानी तो सिर्फ और सिर्फ ओशंस में है, बाकी तो लेक में है, रिवर्स में है, और कोई कोई तो ऐसा है कि अर्थ के धरती के अंदर अंडरग्राउंड वाटर भी है. ऑब्वियसली हमें पता है ये चीज़. The amount of potable means fit for drinking water is less. Fresh water is precious. This fresh water is required by living beings for their existence. The moisture of for rain, which is the main source of fresh water, comes from the oceans only. So students, जो पीने का पानी जो अमाउंट है ड्रिंकेबल वाटर वो बहुत कम है, इसलिए जो पीने का पानी है वो बहुत प्रीशियस है. प्रीशियस मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाल के रखने वाली चीज़ है, क्योंकि वो पीने का पानी ही हम लोग पी सकते हैं. लिविंग बींग्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीने का पानी पी सकते हैं, सॉल्टी वाटर तो हम लोग नहीं पी सकते. तो वी आर एटलीस्ट डिपेंडेंट टू द रेन. जो रेन होगा तो हमें फ्रेश वाटर मिलेगा, और ओशंस कम्स फ्रॉम द ओशंस ओनली. और ये जो फ्रेश वाटर है, ये जो पीने का पानी है, वो कहाँ से मिलेगा? ओशन के थ्रू होता है. इवेपोरेशंस एंड वो सब चीज़ों में वाटर साइकिल होता है, हमारे वाटर वेपर बनता है, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ ओशंस के थ्रू ही होगा ना स्टूडेंट्स. सो दैट्स वाई ओशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. वाटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू all the living beings students. Valuable chemicals, minerals, salts, fishes, etc. are found in the seas students. Obviously all these found in the seas. As we have living organism on the land, in the same way the sea and oceans have aquatic life inside them. The tremendous force of waves, tides and currents of oceans are potential sources for generating electricity. Besides these, oceans are also useful as waterways. सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमारे लिविंग बींग्स को लैंड में हम लोग जीते हैं, लाइक लैंड में हम लोग रहते हैं, वैसे ही सी और ओशंस में भी रहते हैं. जैसे कि फ़िश होते हैं, देन वेल्स, डॉल्फिन्स, अ लॉट ऑफ aquatic animals are there. So they used to call as aquatic life. उनकी aquatic life होती है पानी के अंदर. और ओशंस में बहुत बड़े बड़े वेव्स आते हैं, टाइड्स आते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, राइट. वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे एसेंशियल है कि ओशंस के थ्रू ही वाटर वेज होता है, राइट. पानी के थ्रू ही तो हमारे बहुत सारी ट्रेडिंग चीज़ें होती है, एक जगह से दूसरी जगह वाटर वेज के थ्रू ही तो जाते हैं, राइट स्टूडेंट्स. सो दिस वर इज़ ऑल अबाउट द हाइड्रोस्फीयर स्टूडेंट्स. सी आप ये आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड देख सकते हो. ये जितने भी आउटलाइन है ये सारे के सारे मैप है, राइट. आउटलाइन वर्ल्ड का मैप है. तो जहाँ जहाँ पे ये लैंड प्रोसेस नहीं है वो सब जगह पे पानी ही पानी है स्टूडेंट्स, ओशंस है स्टूडेंट्स. ये आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया है. सो स्टूडेंट्स,
आपके क्या आज हमने जाना? आज हमने ये जाना है कि लिथोस्फीयर क्या है और हाइड्रोस्फीयर क्या है और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टू phases, right? Now students, in the next video we will discuss about the atmosphere and then we will discuss about the biosphere. Okay students, so now my video is will be in the end. So now it's my duty that I have to give you the homework, so which I have already told you that you have to draw this स्पेसेस ऑफ द अर्थ स्टूडेंट्स. ओके, ये पूरा का पूरा आपको ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स. ओके, इन योर social science notebook, and that is compulsory because I will definitely check it out. Okay, so students, till there I will see you in the next video with the second part of the same chapter, what is around us students. Okay, so till there, stay home, stay safe students. I would like to pack up my words with the help of these line. I would like to pack up. Tada, and have a nice day students. And if you have liked my video, so please like, share and subscribe students channel is this which have been linked over there. You can subscribe my channel if you have liked my video students, and comment me down. Okay students, so bye bye and have a nice day.